I think, yeah. Thank you, Kamakshi. We'll just start that. नमस्कार. आज 3 सितंबर 2023 संडे को आज डॉक्टर KK HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट में हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और जो भी व्यूअर्स डॉक्टर KK अग्रवाल जी के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े हैं उनका सबका स्वागत है. और आज जो हमारा टॉपिक है न्यू स्टडी ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये टॉपिक हमने प्रीवियसली मीटिंग में लिया है, बट उसमें ये डिस्कशन हुआ कि इसमें मेडिकल एक्सपर्ट की भी ओपिनियन होना चाहिए. तो आज हमने डॉक्टर आजम कबीर को जो है इनवाइट किया हुआ है इसी मेडिकल एक्सपर्ट्स में. उसके पहले मैं जस्ट एक रिकैप जो है देना चाहूँगा जो पिछली मीटिंग में डिस्कशन हुए. एक जस्ट ब्रीफ दे करके रिकैप करके देन मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसके बाद डॉक्टर आजम कबीर को कि वो जो है इसको आज हमको थोड़ा सा इस विषय पे अपने उनके क्या व्यूज हैं और क्या मैं जो मेडिकल एक्सपर्ट की तरह उनकी क्या राय है वो बताएंगे. तो वी ऑल नो दैट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ आर वेरी वेल नोन. PM 2.5 लेवल पर्टिकुलरली जो पर्टिकुलर मैटर जो 2.5 माइक्रोन साइज के हैं, पर्टिकुलरली इंडो गैंजेटिक प्लेन जो इसमें दिल्ली NCR भी आता है, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स यूजुअली एक्सीड 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब विंटर में, इतना तक, बिकॉज वेरी हाई जो ग्रैप कंडीशन हो उसमें डिफरेंट सीवियर प्लस कंडीशन में आ जाते हैं. एंड सम टाइम इट गोज 800-900 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब because of various regions including very calm condition. तो ये जो है this is very well known. और हमारे जो WHO now recommending 5 माइक्रोग्राम और हम जा रहे हैं 500 और 900 और 800 माइक्रोग्राम. तो definitely बहुत ही huge gap है, very big task to reduce that. The study जो हम आज जिस पे हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, this is the on association between PM 2.5 and जो air pollution level है and antibiotic resistance has been published in the this month in last month in August 2023 in the Lancet Planetary Health Journal. तो ये अभी very recently just out I think maybe 15 days back ये publish हुई. और इसमें antibiotic resistance basically is a very increasing in general also global issue and causing millions of deaths worldwide every year. Or antibiotic resistance caused nearly 1.27 million premature deaths globally in 2019. This was the data that already caused this kind of premature global death. This study was conducted based on the data from the 116 countries from year 2000 to 2018, and more than 11.5 million tested isolates were included in the final data. The study also included the raw antibiotic resistant data, which included 9 pathogen and 43 types of the antibiotic. The finding indicates the significant correlation between PM 2.5 levels and antibiotic resistance, which were consistent globally in most antibiotic resistance bacteria. The correlation were found to be strengthened over time. The antibiotic resistance derived from PM 2.5 caused a estimated 0.48 million premature death and 18.2 million year of life lost in 2018 worldwide, corresponding to an annual welfare loss of the US dollar $395 billion due to this premature deaths. The maximum effect of PM 2.5 on antibiotic resistance was seen in the West Asia and North America, and this is also the 10% increasing in the air pollution levels result, because हम तो 10% क्या, there is a maybe number of times maybe 10-20% or 30% or 40% also. This 10% increase in air pollution result in 15 to 18% increase in this mortality. The study says that if WHO target जो हमारा है 5 microgram of 2.5 is achieved by 2050, this will reduce antibiotic resistance by 16.8% and avoid 23.4% premature death
due to antibiotic resistance, equivalent to saving $640 billion. So this is a very, very big task, particularly in the gangetic plain. और अभी हमने एक रिसेंट स्टडी एक और रिलीज हुई, अभी हमने जो स्टडी रिलीज लेटेस्ट स्टडी जो रिलीज हुई है, आपने सभी देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक स्टडी रिलीज की अभी, आई थिंक जस्ट टू फ्यू डेज बैक, आई थिंक मे बी 4-5 दिन पहले की बात है, कि उसमें अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी the lights are back to you loss 11.9 years of the life expectancy on average जो relative of the WHO guidelines. तो इसमें जो हमारा जो है एयर पोल्यूशन is shortening lives of 11.9 years in Delhi. So this is the report by the Air Quality Life Index जो है released by Energy Policy Institute of University of Chicago. So, and this also declared the Delhi is the most polluted city in the world, though earlier used to be, but still this study also that. And corresponding to the Gurgaon is 11.2 years loss, Faridabad 10.8 years, and the Ghaziabad 10.7 years. So ये study भी is a correlation of the PM 2.5 and the life जो है loss. So ये study also indicate that this air pollution, particularly in northern India, Indo-Gangetic plain, is big issue. और हम इस पे medical experts की, तो before going to further, I'll request Dr. Ajam Kabir to strengthen us in this particular topic. Over to Dr. Ajam Kabir. Thank you so much, sir, for the introduction. A very good afternoon to everyone. It's a Sunday afternoon, and I hope everyone's doing fine. So, as sirs mentioned that air pollution is also been a mode of transition for and a mode of transport for the resistance of bacterial resistance that is building up in day-to-day public health, and also I would suggest in animals as well. So we'll go on to that as slowly as possible. But as general practitioners and GPs, we've all been facing these issues of patients getting resistant towards certain spectrums of antibiotics that we use to treat them. So nowadays, what is happening is that air pollution is been a climb in the ecosystem in almost most of the states of India, as also in other countries as well. But as Delhi is there, Bangalore is also growing, and other southern part of India has also started increasing in their air pollution aspects. So we have been finding a lot of respiratory issues with patients, which were curable before with low doses of antibiotics, but nowadays we've been bound to use the broad spectrum of antibiotics, which again puts up into another question mark: why is this happening? So, as sir said, there's a research of the PM 2.5, which is a measurement unit of how the pollution is increasing. Now we are suspecting that the bacterial resistance, the bacteria which introduces the resistance into the human body, is traveling through that media now, and which surely makes sense that the death rate is also increased after COVID, with respect to the respiratory issues like COPDs, chronic respiratory disorders have increased now, and asthma is back again. People who've been suffering for ages have been having a very bad time these days, and we as general practitioners also have been bound to use higher dose of antibiotics and other sorts of treatments. But yes, this has also been a very big concern nowadays. So the whole cycle of ecosystem here is very simple. Like we nowadays, there's nothing which is original left out in our ecosystem. For example, our food, our air, our plants, everything. So everyone should be knowing about this substance called as the GMEs, the genetically modified or genetically selected organisms or seeds or whatever they've been introduced nowadays. All these have been grown over antibacterial feeds and pesticides and all that. So the introduction of the whole antibiotics into this ecosystem was not there before. And nowadays it's deep into the soil, it is into the air. And then pharmaceutical companies are also
I mean, the waste products of their of those companies are also introduced into the soil, and the smoke is also out. So these slowly, the ARB, which are called the bacterial resistant antibiotics and antibodies, have been introduced now. So that is introduced into animals as well, because animals also eat the same feed. We also eat them, and then that goes into the ecosystem, gets into the air, soil, and water. But only specifically talking about air pollution, yes, that is also a big concern now, because something that affects directly more faster than any other means of food or any other injected medicines is air. So the respiratory tract has been affected quite more than the other transmissions of the bacterial resistance, sir. And also, coming down to how can we control this, or what can we do about this, is again lifestyle changes are there. And then we've been um in, educating our patients about how to use things, how to use the masks which have been introduced after COVID, how to use them when you go outside, and start using air purifiers at home. These are small measures that we are trying to, just play out with the patients, so that they start seeing some results into it. But yes, ultimately, it's all about the whole ecosystem to get the government into picture, and how to try solving these things out. And Dr. there Kabir, is I also think another company here. before going, I just have one question in mind, that I think this is Mm. the important, the kind of the PM 2.5 composition is more important than the size, because I think for antibiotic resistance also, the like the Yes, sir. tailpipe emissions from the vehicular, the very fine particles, they contain the various Yeah, kind of the including the road resuspension dust with the metallic impurity and other kind of different like correct. organic compound. As Lead, maybe correct. the speciation of the PM 2.5. This is more important, because this very toxic compound it contains. That is the this is maybe the main in the mechanism of the antibiotic resistance may be the causing. So I just little want, I mean, something your view on that, because this is question in my mind, because like, and we used to live in the villages and all, the dust is always there, but that is not very harmful dust, that is. But in this urban area, particularly when the vehicular emissions are there, and the road resuspension dust, that was the with the because the vehicles are moving, and the same dust is the airborne, and the ultimately going to we inhale that, and this is the causing more fine particles from the vehicular tailpipe emissions also. This is the so that maybe the important correlation of the research. I don't know the researcher has taken into account that the what kind of the composition that with PM 2.5 causing in the particular urban area and the Delhi and NCR. So I want some little, I mean, that also that. Thank you. Yeah, sir. So PM 2.5 is basically it is a carbon molecule which has been which is explains it all. It's like fine particles of carbon molecules. And in terms of organic compounds like salt, biological group contents, and toxins and pollens. So ये सब मिला के वो PM 2.5 का composition बनता है. And also the physical and chemical composition of this inhalable material, which is the PM 2.5, is considered to be a combination of monoxides and carbon monoxide. Basic content of the thing is content of carbon monoxide. And this carbon, because it is a biological molecule, what happens, metal, organic compounds, salt, biological group contents of such as toxins and pollens, all these try to attach to this compound, and it becomes like a breeding area for the bacteria, the resistance bacteria, to grow on within them. It becomes a carrier for them to travel through. There are compounds like zinc, arsenic, magnesium, copper, sulfur. All these compounds get into these PM 2.5, one molecule of it. And also, uh, because of that being an organic content, it is easy for the bacteria to travel through in it. That is what you were asking, right, sir? That was the question you were asking, Yes. right? That's what in my mind, because this is the not even Yeah. because you have dust from the villages area, because this is pure Yeah, see, dust, the maybe dust in fine the particle villages that. area is, see, Yeah. those particles are different, sir. If we considered the urban areas,
Yeah. Only considering to the urban areas, not the rural areas. Urban areas are more polluted with carbon molecules, especially the monoxide part of it, not the normal dust. The normal dust are something that can be filtered from your nose, from your even you can cough it out, and they're not that minute as the PM 2.5. Normal dust is just like sand and silica. Those will not cause any other conditions what we are facing right now. So these conditions is something like smoking a cigarette. A cigarette also has the same carbon monoxide in it. So PM 2.5 is also a part of that. PM 2.5 is completely different to the dust and the the silicon dust which you get from the urban areas or from the construction part or from the mud or the other part of it. This is a completely chemical condition which is present in the air, Yeah. polluted only by emission of carbon and the burning of fuel, all that. Yeah. You continue, please. Yeah. Thank you. Yeah. So yeah, medically to be concerned of it is, yes, people are suffering because of the antibiotic resistance. People only thought okay, it was only by overdosing of antibiotics or having foods which have been treated with antibiotics, or drinking water which have been purified from the reservoirs and all that. But nowadays air pollution is also been a source for it, and that is very alarming now, because other things also you can control somehow, but air is something you need to breathe. You need to find pure air, and you finding pure air is not that easy. You can't just live in an urban rural area forever. You can't. You have to get that facility of green trees, parks, and other vegetative conditions into the urban area as well. That is only one natural purification that we can think of doing it. Conditions like, yeah, people also blame COVID for what they're facing right now, but COVID might only be a small reason, or a small like a small reason for what we are facing right now. But there are better things that to be blamed for. Anything else, sir? Yeah, yeah. Before going to our other experts here, I'll just ask, because you are practicing and you are, I've attended your previous also discussion that way. So you suggest some of the lifestyle, particularly because the urban area, what kind of special lifestyle or precautions that can take so that the impact is reduced, the particularly the air pollution and with respect to antibiotic resistance that way. Sir, to be on a large scale condition, first, I think we'll have to start correcting ourselves. So, first prevention method of doing it right would be start using masks, probably N95 or surgical masks, depending on the area you're traveling to, would be a very first aid for respiratory conditions. And secondly, would be whenever you go back home, before you eat anything, or before you ingest anything, you will have to cleanse your mouth, gargle, do those basic routine of cleansing, gargling, cleaning the nose, cleaning your hands and all, so that the air passage and the oral passage becomes clean. Secondly, would be if you're at home and if you can afford a air purifier, it would be one of the best things to you keep your home and environment also a little cleaner. And then to be servicing for the public, I would suggest, I mean, just grow more gardens, have home gardens at small plants growing at home. These are something that we can change in a small scale area, and then probably when everyone starts doing it, then slowly this will definitely recover. And anyways, nowadays the vehicles have also been changed to electric vehicles, and all that is happening slowly. So I'm hoping it should these things preventing doing these things can prevent a major part of the conditions. And also, the moment you get any cold or cough or any other issues, please visit your GPs, ask them why this is happening before it becomes worse. Just get yourself checked, that if it is a regular flu or you've been suffering from polluted uh, COPD or any other respiratory disorders, having a routine checkup also would give you a heads up from landing anything bad. Anything related to Ayurvedic, and because the ancient, Okay. I mean, the things that There we is can, also yeah. there is also
Yeah. So Yeah. there are few Home basic remedy home kind of remedies or that Ayurvedic things. Yeah, yeah, yeah. we can use. So when I was been traveling to a higher altitude area in Ladakh and all that, I've seen people eating ginger. Mm. So ginger helps in increasing your absorption of oxygen and cleansing up your respiratory tract because of its heat and potency. In Ayurveda also we give the crushed form of ginger for people who are suffering from respiratory disorders. This is something like ginger ka murabba. They have something called as the murabba of the ginger, and yeah, we have conditions. We have medicines like dashamula, arishtas, and dashamula. The 10 different medicinal drugs. Dashamula is one of the very good medicine that I've been using and prescribing for clients with respiratory conditions. It also improves their lung health and definitely restores their respiration back. But yes, when you're talking about lifestyle changes, I would suggest yes, please stop smoking. That is one of the worst things anyone can do. And whoever is into that, try to get out of it. Yeah, we are also not better than any smokers because the pollution rate is also so high that if you go check our lungs, also will be the same condition. Yeah, But it is yeah, better yeah. than doing. Yeah, there's nothing we can't identify nowadays. So the X-rays and the CT scans, it's quite difficult to identify who smokes and who doesn't smoke. It's very unusual. So yeah, ginger, dashamula is one of the best medicines you can take, and also to cleanse your nasal passages, there's a yoga practice that we do called as nethi, and that is also very helpful, which is called the oil pulling or nasal water pulling and all. Those are some things that which will definitely prevent from having Yeah, this yeah. done. Yeah, thank you. Will Dr. Ajit Pavir will come back to you. Stay, please. So I'll Yes, sir. request, though you already, I think we have discussed last time, but I want your further view on that, particularly in the Indo-Gangetic plain in this area. I was talking about the particularly speciation of the PM 2.5 and all. So what kind of very concrete measures you can suggest, and what particularly the people in the Indo-Gangetic plain, what should do, government should do, and well, I'm sure your view on that. Over to Gupta ji. Yeah. Hello. Gupta. Yes, yes. Good morning to everybody. डॉक्टर साहब, मैं ये बातें कई दफ़ा कई लोगों से कई प्लेटफॉर्म पे यही सुनता रहता हूँ, और कई दफ़ा ये सोचता रहता हूँ कि दिस हैज बिकम एंडलेस काइंड ऑफ ए डिस्कशन, क्योंकि हम जब कभी भी बात करते हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हों, सभी कहते हैं कि भाई अडॉप्ट लाइफस्टाइल चेंजेस। बहुत अच्छी बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, और ये हम बहुत शुरू से कहते रहे हैं कि जो हिंदू संस्कृति में है वो लाइफस्टाइल चेंजेस ट्यून्ड विद द नेचर रहे थे, इसलिए वी वर वेरी हैप्पी एंड आवर हेल्थ फॉर गुड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपिंग प्रोडक्ट्स डेवलप करने वाले या सर्विसेज बेचने वाले हैं, वो इतना टेम्पटेशन हमारे सामने रख रहे हैं टीवी के थ्रू, अखबार के थ्रू, एक्सपोजर्स के थ्रू, कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज बदलना ही हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। हम इतने विज्ञापनों को देख देख के लालच में पड़ते जा रहे हैं कि यार ये ले लेते हैं, चलो ये बड़ी कन्वीनियंस है, इसमें बड़ा आराम है। हम वो सब चीजें कर रहे हैं, उससे हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। हम चाहें भी तो उस लाइफस्टाइल को बदल नहीं सकते। तो गवर्नमेंट के लेवल पे या ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, इनके लेवल पे कोई ऐसा एफर्ट नहीं हो रहा कि वो अपनी तरफ से उन चीज़ों का प्रोडक्शन या उन चीज़ों का यूज़ कम कराने की कोशिश करें। वो डे बाय डे उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये भाषण देना या लोगों को एडवाइस करना कि भैया तुम अपना लाइफस्टाइल बदलो, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इट इज़ बिकम रियली ए बिग चैलेंज फॉर एवरी इंडिविजुअल टू डू दैट। और दूसरा, मुझे कई दफ़ा लगता है इन बातों को सुन के कि ये जो हर बार एम्फेसिस जो है PM 2.5 पार्टिकुलेट्स के ऊपर कंसंट्रेट करा जा रहा है, rather than on finer और अल्ट्रा फाइनर पार्टिकुलेट्स। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि ये सिर्फ PM 2.5 की वजह से ही है। क्या कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि ये सब फाइन और अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट्स, उसमें PM 2.5 से ज्यादा भी लीथल मुझे लगते हैं PM1 पार्टिकल्स हैं या उससे भी है, लेकिन उसकी कोई हम बात नहीं करते, क्योंकि
अब वो एक यार्डस्टिक बन गई कि पहले हम टोटल टीएसपी नापते थे, फिर PM10 नाप रहे थे, अब PM2.5 नाप रहे हैं। तो इसी पे सारा एम्फेसिस डाल दो। और PM1 करने के लिए क्योंकि अभी हम तैयार नहीं है, इसलिए उसकी बात ही मत करो, क्योंकि उसको करने से फिर और समस्याएं खड़ी होंगी और नई नई चीजें आ जाएंगी। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि PM2.5 की जगह हमको अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स के ऊपर एम्फेसिस डालना चाहिए। और तीसरा, जितनी भी रिसर्च स्टडीज पब्लिश होती हैं वो सब सारे हेल्थ इश्यूज को बड़ी कन्वीनियंटली PM2.5 के साथ लिंक करने की कोशिश कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास जो और सॉल्यूशंस हैं वो उनकी तरफ से ध्यान हटा रही हैं हमारा। क्योंकि PM2.5 को कम करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना ज्यादा कंसंट्रेशन में वो निकल रहा है, एमिशन निकल रहे हैं उसके। तो एक ऐसी चीज को पकड़ लेना जो कभी अचीव नहीं होगा, तो बड़ा कन्वीनियंट होता है किसी आदमी के लिए अपने उस रिसर्च को लिंक कर देना कि भाई देखो ये तो अचीव हो रहा है, अब क्या करा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि रिसर्च के लोगों को एक दूसरा एफर्ट ये भी करना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड की डिफरेंट क्लाइमेट जोन में जो लोग रहते हैं उनकी इम्यूनिटीज में कितना कितना फर्क है। क्या हिंदुस्तान में रहने वाले और अमेरिका में रहने वाले या यूरोप में रहने वाले आदमियों की इम्यूनिटी सेम है? क्या उनके ऊपर PM2.5 का इम्पैक्ट वैसे ही है जैसा हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर है, या हमारे रूरल और अर्बन एरियाज के ऊपर है, या अलग अलग जो क्लाइमेट जोन में लोग रहते हैं? तो उस पर रिसर्च का कभी फाइंडिंग नहीं आता कि भाई इस तरह की इस लो इम्यूनिटी वाले लोगों पे PM2.5 का ये असर होगा, इस इम्यूनिटी वाले लोगों पे ये असर होगा। तो जब तक हम इस तरह की बातें ना करें, बजाय इसको यूनिफॉर्मली, जैसे WHO ने कह दिया कि भाई less than 5 माइक्रोन इज द स्टैंडर्ड, इट इज यूनिफॉर्मली अप्लाइड अक्रॉस द ग्लोब। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी फैलेसी है उसमें। हमें इम्यूनिटी के साथ इसको लिंक करना चाहिए कि भाई इस क्लाइमेट जोन में जो लोग रहते हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल ये है। अगर इतनी इम्यूनिटी लेवल हो तो PM2.5 का टॉलरेंस लेवल वुड बी से 60 माइक्रोग्राम और 50 माइक्रोग्राम और 40 माइक्रोग्राम, नॉट 5 माइक्रोग्राम। तो ये थोड़ा सा रिसर्च इसमें करने की बहुत सख्त मुझे लगता है जरूरी है। और चौथा भाई, जो मैं हर बार हमेशा कहता हूँ कि जब हमें सोर्स का पता है कि भाई फाइन पार्टिकुलेट्स हमारे लिए समस्याएं करते हैं, चाहे PM2.5 हो, चाहे PM1 हो, चाहे PM10 ही हो, तो हम क्यों ना सारी एनर्जी उस को कंट्रोल करने में लगाते हैं। हम उस पे कंट्रोल में नहीं लगा रहे, हम लोगों को भाषण देने में लगा रहे हैं। हम बिल्कुल भी कंट्रोल करने की तरफ कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि कंट्रोल करने में एक लालच फंसा हुआ है, और वो लालच को कम करना तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है टू रिड्यूस द एमिशंस। तो जब तक मैं तो ये कहूँगा कि जो ये डेवलपर्स हैं या जो चीज़ें बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इनको सबको एक मंत्र अपने माइंड में रखना चाहिए कि भाई लीव ग्रीड बिहाइंड फॉर बेटर हेल्थ। तो जब तक आप वो ग्रीड को पीछे रख के अपनी बेटर हेल्थ की तरफ नहीं ध्यान सोचना शुरू करेंगे, तो हम इस मिशन में कैसे कामयाब होंगे? तो ये सब 3-4 चीजें मेरे माइंड में बार बार आती हैं कि हम किसी तरह से इन चीज को एम्फेसाइज करके अक्रॉस दी कम्युनिटी अपना व्यू पॉइंट पहुंचाएं, तो शायद कुछ बात बन जाए। थैंक यू गुप्ता जी। और आपका मैं भी एग्री करता हूँ कि जितनी भी स्टडी चाहे पहले हुई हो, आज भी हो रही हैं, तो बेस्ड ऑन PM2.5 है। और उसमें जो पर्टिकुलरली इंडिया है, जो बिकॉज और पर्टिकुलर इंडो-गैंजेटिक प्लेन में डेली इजी टारगेट है, बिकॉज कोई भी आज बात नहीं करता है चाहे ओजोन पे, बेंजीन पे, BOC पे या नॉक्स पे पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारे गैसेस की कोई बातें नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑल टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर मैटर, वो भी PM2.5 पे। अभी जो शिकागो स्टडी है जो एनर्जी इंस्टीट्यूट की है, और चाहे ये लैंसेट जर्नल में है या कोई और स्टडी, सब भी ऑल बेस्ड ऑन मोस्टली PM2.5। तो इजी टारगेट है उसमें इंडिया। और हमें जो भी चाहे जिस तरह की जो इंडेक्स आ रहे हैं इंडिया के लिए, चाहे जो इसका आपका ह्यूमन जो इंडेक्स है, लाइफ इंडेक्स है, ये सभी टारगेटेड टू इंडिया, बिकॉज उसमें अभी जो रिसेंट इंडेक्स आया उसमें हम लोग जो है जो ह्यूमन इंडेक्स वगैरह में वो अफगानिस्तान और उससे पीछे आ रहे हैं। मतलब तो ये टारगेट क्या है मतलब इसमें? और जबकि हमारा जो है आप देखिए हमारी इकोनॉमी और हमारा इनकम और किस तरह का है, तो आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी, आई एग्री दैट सम काइंड ऑफ वेरी टारगेटेड रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू मे बी विद द इंडिया जो, और इसमें इंडो-गैंजेटिक प्लेन और दिल्ली तो इजी है कि हम वी बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड बेस्ड ऑन द PM2.5। अब इट ऑलवेज दे, बिकॉज हमारा ये जियोग्राफी इस तरह का है, एरिया इस तरह का है कि हम WHO 5 स्टैंडर्ड तो अचीव ही नहीं कर सकते। जब कोविड में जो ऑल एक्टिविटी वाज स्टॉप, तब हमारा 25-30 PM2.5 हम मारे थे, जबकि सब कुछ स्टॉप था।
तो हम बेस लाइन हमारा ये है, तो हम कैसे आ सकते हैं जो हम 5 माइक्रोग्राम जो है पर मीटर क्यूब है WHO स्टैंडर्ड। तो दिस इज अ वेरी आई थिंक सम स्टडी, इंटरनेशनल स्टडी जो आपने कहा, इस तरह की ज्योग्राफिकल बेस्ड स्टडीज होना चाहिए, इम्यूनिटी बेस्ड होना चाहिए, और इसमें नॉट ओनली की वन पैरामीटर ले लिया एंड इसमें कर रहे हैं। थैंक यू। सो थैंक यू। खंडेलवाल जी, एनीथिंग यू वांट टू से टुडे? जस्ट आपका म्यूट है सर, म्यूट है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं है, हमारा तो यही है कि वो जो गुप्ता जी कह रहे हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस का जो एटीट्यूड है, उसको जब तक इम्प्रूव नहीं होगा बहुत मुश्किल है। नहीं मतलब उसमें पर्टिकुलरली जो आप आज हम बात कर रहे हैं कि जो फाइन पार्टिकल और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स और ये, तो ये इशू अर्बन एरिया में तो बढ़ते ही जाएंगे, बिकॉज इसमें देयर इज वेरियस इशूज जो कंट्रोलिंग, जो सोर्स कंट्रोलिंग है, जो गुप्ता जी बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं, ये बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग इशूज, कि उसमें जो जब तक वेरी टफ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होंगे, तो चाहे वो पर्टिकुलर लैंडफिल से हो या और किसी सोर्स से हो, वेरी वेरी डिफिकल्ट, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हो। देखो, हेल्थ इज मोर PM2.5 के इम्पोर्टेंट। ऑलरेडी 5 सोर्सेज हमको पता है, ये और हर सोर्स को हम बढ़ा रहे हैं, कहीं भी किसी भी सोर्स को हम कम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो वेहिकुलर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो पांचों इश्यूज अगर इफ यू कंपेयर, मतलब 1970 से लेके अगर हम 2023 तक करें, तो ग्राफ बढ़ ही रहा है। कहीं पे भी ग्राफ को नीचे नहीं आया, नहीं किया गया, नीचे तो छोड़िए, वो भी नहीं किया गया कि स्टेबलाइज भी नहीं किया गया, स्टेबलाइज भी नहीं किया गया। नाउ और द बैलून इज फुल फॉर नो फर्दर दिस थिंग, एंड प्लानिंग करी गई, एनसीआर बनाया गया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वेस्ट मैनेजमेंट के खंडेलवाल जी, दिस इज द रीजन ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सिटीज आल्सो, कि हम हमारी सिटी की कैरिंग कैपेसिटी पे कभी कोई इस तरह की स्टडी नहीं कि हमारा सिटी जो है सर वही है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इसीलिए बना था जी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अगर पहली रिपोर्ट आप देखो, बहुत अच्छी थी, बहुत इम्प्लीमेंटेबल थी, लेकिन क्यों? मेरे को सेपरेट टॉयलेट चाहिए, मैं मेयर हूं, मेरे को तो अलग सेपरेट ही कमरा चाहिए, मेरे को तो सेपरेट ही टॉयलेट चाहिए। जब ये इंटेंशंस होंगी, ग्रीड है ना सर, मन में ग्रीड पड़ा हुआ है, क्या तब तक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। और दूसरी बात सब लोग ये है, वेबलिंक पे आ गए ना, अब मैक्सिमम मीटिंग ऑनलाइन होने लगी ना जी। हाँ, नहीं, दूसरी बात प्रवीण जी की, और दूसरी बात ये हो रही है कि अब हम बड़ी तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी रूरल एरियाज हैं वो अर्बनाइज हो जाएं, वो भी ऐसी हो जाएं जैसे अर्बन एरियाज हैं। तो हम ने कहा कि हम अति मचाने में लगे हुए हैं, रोक नहीं रहे, बढ़ा रहे हैं उसको। तो ये रूरल एरियाज भी थोड़े दिनों में वैसे ही हो जाएंगे, फिर ऑल ओवर द कंट्री एक से हाल हो जाएगा, फिर आपको कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं पड़ेगी। चलिए, ठीक है खंडेलवाल जी, गुप्ता जी। नाउ आई थिंक नीरज जी मैं सुनना चाहूंगा, देन आई थिंक उसके बाद जो है वी हैव अभी 10 मिनट्स। तो नीरज त्यागी जी, आप तो काफी स्टडी वगैरह करते रहते हैं, और जो भी इंटरनेशनली जो रिसर्च है और चीजें, तो आपके क्या व्यूज हैं आज पर्टिकुलर टॉपिक पे? जी, सबसे पहले तो वो श्याम गुप्ता जी जो कह रहे थे PM 2.5 का, ये मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन उठा था कि PM 2.5 को ही क्यों ले रहे हैं, और भी पार्टिकल्स हैं। तो मुझे तो ये, हम अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स, तो हमारे 1 साल पहले ये बात हुई थी कि अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स की स्टडी थोड़ी कम है, डाटा अवेलेबल कम है। PM 2.5 हमने भी HCFI में लिया था, उसको लिया था, ये टॉपिक लिया था, तो उसमें भी यही था कि इसके डाटा होने चाहिए, इस पर स्टडी होनी चाहिए, तो वो अभी इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। और PM 2.5 का जैसे है कि हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर, हमारी परमिएबिलिटी को जो सेल्स की है वो बढ़ा देता है। PM 2.5 इतना फाइन होता है, तो इसी वजह से ये इसको एसोसिएट किया गया होगा। और विद एवरी 10% राइज इन एयर पॉल्यूशन लिंक विद इंक्रीजेज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ 1.1 पर, ये चाइना फंडेड स्टडी हुई है। हम पैरेलल में इंडिया में भी इस तरह की स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि 2018 तक की स्टडी है ये, जिसमें जब वो कोरोना पीरियड है ना, वो भी स्टडी इसमें होनी चाहिए थी 18 के बाद। तो वो स्टडी से फिर और हमें डाटा अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि कोविड में भी वायरस का काफी कुछ हुआ था, तो वो बहुत अच्छी फाइंडिंग इंडिया की साइड से हम अगर करें तो ये काफी हेल्पफुल होगा। और
जो भी हमारे जो रिसेंट ईयर में तो एनालिसिस इंडिकेट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रिजल्टिंग फ्रॉम एयर पोल्यूशन वाज लिंक्ड टू एन एस्टिमेटेड 4,80,000 प्री मैच्योर डेथ्स इन 2018। एक्चुअल में क्या है कि ये इन्होंने ऐसा कोई साइंटिफिक फुल प्रूफ स्टडी तो नहीं है, लेकिन एक एसोसिएशन है, मींस इट इज ए पाथवे, जो पॉल्यूशन है इट इज ए पाथवे फॉर एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। लेकिन इसके रीजन दूसरे भी हैं। हम जो ड्रग्स यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। ओवर यूज की वजह से भी होता है तो ये फैलता है। तो रूट कॉज तो वो भी है कि हम मेडिकल उसमें मेडिसिन में थोड़ा सा उसमें भी वहाँ भी मॉनिटरिंग करें कि गलत एंटीबायोटिक ना दिए जाए और इस तरह के जो रेजिस्टेंस हो रहे हैं। और डॉक्टर्स हु ओवर प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर medication resistant illness, but new research points to another potential culprit। ये इन्होंने एयर पोल्यूशन की तरफ थोड़ा सा डायरेक्शन की, और ये एक तरह से अच्छा भी है कि इस बहाने कम से कम एयर पोल्यूशन पे और ज्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि आपने अनिल कुमार जी ने बोला भी था कि 5 माइक्रोग्राम का जो लिमिट है वो मीट आउट कहाँ कर पा रहे हैं, बहुत सारे कंट्री नहीं कर पा रहे, बहुत ही और ये उस लिमिट तक अगर पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर इस डायरेक्शन में। और जो होंग चेन जो प्रोफेसर थे, उन्होंने खुद बोला है कि until now we did not have a clear picture of possible links between the two, but this work suggests the benefits of controlling air pollution could be twofold. Not only will it reduce the harmful effects of poor air quality, it could also play a major role in combating the rise and spread of antibiotic resistant bacteria. तो थोड़ी रिसर्च की और जरूरत है। और जैसे गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि इसमें हमें सोर्सेज को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी कुछ दिल्ली में कुछ ऐसा एक आसमा करके कोई एप्लीकेशन डीपीसीसी वाले शायद डेवलप कर रहे हैं, आईआईटीएंस की कुछ हेल्प से, वो अभी शायद पब्लिसाइज नहीं हो पाया है। उसमें जो भी आप उस एप्लीकेशन के थ्रू देख पाएंगे कि किस सोर्स से पॉल्यूशन ये कंट्रीब्यूट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट से हो रहा है या आपकी और जो डंप है या पावर प्लांट है, वो सब उसमें इंडिकेट होगा। मेरे ख्याल से अभी वो आ नहीं पाया है। नहीं, आईआईटी उसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली एंड डीपीसीसी अपना मिला के कुछ स्टडी हो रही है। जी कानपुर रियल टाइम सोर्स अपोजिशन स्टडी दैट जी दैट विल गिव रियल टाइम पिक्चर ऑफ द व्हाट वर सोर्सेस ऑफ द जो आपका हो रहा है। तो उसमें गुप्ता जी की बात जो थी वो पता, उसमें सोर्सेस का हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको उसी हिसाब से हम कंट्रोल भी कर पाएंगे। और जितनी भी हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एरियाज वेयर एयर पोल्यूशन एक्सीड्स हेल्थ स्टैंडर्ड्स सेट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपने कहा ही था कि मीनिंग दैट द ब्रेथ एयर कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग PM 2.5, breathing polluted air raises the risk of premature death from heart diseases, lung, stroke, cancer। और जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए में, उन्होंने प्रपोज किया है, they have proposed multiple new policies to try to limit the PM 2.5. It is a good indication। लेकिन इसमें सीधा कनेक्शन एक कैटल का भी है, जो हम जो उन्होंने जो ऑथर्स ने of the new paper did not indicate a reason for the link between air pollution and antibiotic resistance. However, PM 2.5 in the air can carry antibiotic resistant bacteria, or when those particles are inhaled by humans or animals, antibiotic resistant infection may spread। However, more research is needed। लेकिन जो प्रीवियस रिसर्च हुई है उसमें जो हम कैटल फीड लॉट्स है, जैसे टेक्सास में है, उसमें हम कैटल्स को जो देते हैं, द एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज अनदर मेन ड्राइवर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फार्मर्स ऑफ्टन ट्रीट लिवस्टॉक विद एंटीबायोटिक्स प्रिवेंटिवली to avoid infections and to induce growth। The widespread use of antibiotics among livestock accelerates antibiotic resistance in on-farm bacteria, which can then spread throughout the broader environment। It is really important that people begin to acknowledge that this is a really viable pathway for transmission of antibiotic resistance in the environment। And global efforts to reduce air pollution could avoid almost a quarter of premature deaths due to antibiotic resistance। Controlling air pollution might lead to substantial health and economic GDP भी हमारी इफेक्ट होती है। अगर लोग बाग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, प्रोलॉन्ग इलनेस चलती है, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी उससे इफेक्ट होगी, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होगा अगर हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे।
और साथ में एक चीज, दो चीजें हैं कि जो हमारे स्टेट बोर्ड्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं जो भी स्टेट्स के, वो फंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे प्रॉपर, उसको फिक्स डिपॉजिट में कर देते हैं फंड्स को, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में करें। मैन पावर की बात करते हैं तो मैन पावर में उसको इस्तेमाल करें, अच्छे ब्रेन को लें अपने उसमें, वो उसको एक तरह से फिक्स डिपॉजिट करके प्रॉफिट वाले उसमें जा रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो ये फंड का भी एक उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और खंडेलवाल जी ने जैसा कि एनसीआर बोर्ड की भी बात बताई थी, प्रॉपर प्लानिंग की बात बताई थी, तो प्लानिंग तो जरूरी है ही, हमारा फोकस होना चाहिए प्लानिंग पर, हमारा सब कुछ हैफाजार्ड हो जाता है, जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व कर लो, फिर लॉन्ग टर्म में हम काफी कुछ सोच नहीं पाते। तो यही सब मैं कहना चाहता था। जी जी, थैंक यू त्यागी, थैंक यू फॉर योर deep study and research based on that. So thank you. Now I'll request again maybe few minutes, Dr. एक दो मिनट अगर Dr. आजम कबीर can anything finally you can just to our अच्छा, एक viewers. चीज और है, नवंबर में ये एंटी माइक्रोबायल वीक मनाने जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल। जी जी, तो उस समय कुछ एक स्पेशल प्रोग्राम रखा जाए, रख सकते हैं उसमें नवंबर में। या तो Dr. आजम कबीर, any just further to our viewers that was finally your views on that. sir, as sir told ke until we don't do the main research and not only blame one particle for it, then even, I mean, हम लोग भी ज़्यादा doctors कुछ नहीं कर सकते. But yes, in terms of medical professional, yes, what we can do is try to cure people and then give some remedies to, until and unless the whole ecosystem is recovered or probably reduced, then medicines which research should improve in that. And yes, home remedies तो हैं, बहुत सारे हैं. As I mentioned, few of my Ayurvedic medicines are there, and some bronchodilators are there. There's also improvement that there is also a few exercises which are called as nitric oxide exercises that will also improve your blood circulation throughout your lungs and probably will reduce the coagulation of all these particles into the arteries. क्या होता है sir कि there is a saying that if you work out at least 30 minutes a day with enough intensity according to your age, your body will start reacting to whatever the condition it might be. So if you see people everywhere around the world, they have a routine for themselves and they do something for themselves for like 10-15 minutes a day. So I think we should start adopting at least that much, कि 10-15 मिनट अपने आप के लिए, या फिर प्राणायाम कर लिया, या फिर कपालभाति कर लिया, few exercises where breathing exercises, where you can improve, just push your lungs to expand a little more. These are some things that we can do slowly to make some changes, which I suggest would be better. That's all. Yes. Thank you. I think that's what we has learned from today. Besides the controlling the sources of air pollution, that is the task mostly with the government and regulatory authority, but public contribution and public support is also very important, so that at least whatever you finding the source, that was the maybe burning of the waste or anything, that you can the stop and you can just to complain the authority. That is so. This is one of the second is the definitely the Dr. Ajam Kabir, the lifestyle changes that and control also, particularly in winter months in Delhi and NCR and Indo-Gangetic Plain. The basic जो first aid होता है, like mask, the or air pollution जो control system or air filtration system you have it at home, air filter जो आपका जो भी होता है, so इस तरह का ये आप कर सकते हैं. और second thing is the like जो हमारा Ayurvedic and all, I mean the home medicines also, जो normally जो very practice से, चाहे वो जिंजर हो, चाहे वो टर्मरिक हो, या और कोई इस तरह का जो आप मतलब रेगुलर आपका एक पार्ट ऑफ दी मे बी और डाइट और मे बी एज ए मेडिसिन आप उसको ले सकते हैं, समथिंग लाइक. तो ये चीजें बिकॉज कोविड में इसका इम्पैक्ट है. हमने देखा डॉक्टर KK अग्रवाल के टाइम पे जब वो यूज टू रिकमेंड, हमने एक कैंपेन चलाई थी NGT, नीम ग्लोए तुलसी. तो ये एक हमारा एक कैंपेन चली थी उसमें कि हमने ये कहा था कि भाई नीम तो आपको हर जगह मिल जाएगी, आप यू कैन टेक दी, एंड तुलसी आप घर में कर सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं. तो ये हमने कहा था कि ये वेरी वेरी
बेसिक चीजें हैं जो हम लेते हैं। और बड़ा एनजीटी का हमारा कैंपेन को, उनके लेक्चर भी थे, उनके वीडियो भी थे डॉक्टर अग्रवाल के। तो इस तरह की जो हमारी जो सदियों से इस तरह की जो हैं उनको भी हम ले सकते हैं। तो वी हैव टू, देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो एक सम डेफिनेटली सम मैकेनिज्म कोई लिंक है ऐसा, बट हमें जो होम रेमेडीज है और जो हमारी आयुर्वेदिक जो है ट्री, हमारे प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट है, इनसे हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल को है जो भी, चाहे आयुर्वेदिक हो या योगा हो या और चाहे एक्सरसाइजेज हो या वॉकिंग हो, ये कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत सी इशूज पे, और हमारा फाइनली यही एम था कि हम एक बेस्ड ऑन की एक मेडिकल डॉक्टर आजम कबीर का थैंक यू करेंगे, और इस हिसाब से कि बेस्ड ऑन दी जो भी आपकी एलोपैथिक रिसर्च है, बट हमारा जो इंडियन लाइफ स्टाइल है, इंडियन जो हमारा फोकस टूवर्ड्स दी आयुर्वेदिक होम रेमेडीज पे, उसका मिक्स हमने लिया आज। और सभी एक्सपर्ट मेंबर का थैंक यू करते हुए और अपने व्यूअर्स का